इमेजिन करें कि if a trader goes to some of these exhibitions, so कितना बिजनेस लेके आएगा. Very true, यार. I mean, the world opens up for you. It's totally a new world. 2-3 एडवांटेजेस जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद के होंगे पाकिस्तान के लिए. We want to boost foreign direct investment. ठीक है. क्योंकि we need foreign exchange. सही. Apart from that, tourism will be promoted. सही. आप ये अंदाजा कर लें इसके अलावा कि जितने ऑफिसेज यहाँ पर मल्टीनेशनल खुलेंगे और करंटली अगर आप सिर्फ ट्रेड कंस्ट्रक्शन के हवाले से देख लें तो समवेयर अराउंड 32 इंडस्ट्रीज अफेक्ट होती हैं. कोई अगर एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू होता है किसी शहर के अंदर तो 32 डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जो कि उससे एफिलिएटेड होती हैं. तो आप अंदाजा लगाएं कितने घर से परवरिश पाएंगे, कितने खानदान इससे एसोसिएटेड होंगे. आफ्टर द कम्प्लीशन मोर देन 20,000 पीपल विल बी डूइंग जॉब इन दिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. ऑलराइट. So in the next few programs, we'll be having series also for World Trade Center. Inshallah. Well, talking about World Trade Center Islamabad, unique advantages that it has over other trade bodies. अच्छा मुझे ये बताइए शहजाद कि आपका जो स्लोगन है that's very catchy, you know, and especially looking at the world जिस तरह अब ये चल रहे हैं हालात, peace and stability through trade. ये आप लोगों का मोटो है. इस हवाले से थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को एजुकेट करें. सलमान, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की अपनी कुछ कमिटीज हैं जिसके अंदर वहां पर वो डिफरेंट अपने विजन्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर जिसके थ्रू काम करते हैं. जो हमारा सबसे मेजर जो गोल है इट्स पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू ट्रेड. सही. मतलब आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है. आप जनरल पब्लिक को भी देखें क्या करते हैं. क्राइम की सबसे बड़ी वजह क्या है, किस तरह शुरू होता है, राइट, पॉवर्टी. अगर किसी कंट्री के अंदर किसी वजह से इकोनॉमिक बूस्ट आता है तो ऑब्वियसली वहां की आपकी इंडस्ट्रीज बेहतर होंगी. पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का करम है, हमारे पास हर तरह का स्किल मौजूद है. वी आर वेरी रिच इन रिसोर्सेज. हर तरह के रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है. द लिविंग स्टैंडर्ड, द लाइफ स्टाइल इज अमेजिंग. मतलब यू कैन नॉट लिव लाइक दिस इन एनी अदर कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड. इन चीजों को हमने प्रमोट करना है, पाकिस्तान को प्रमोट करना है. इनफैक्ट जिस तरह से अगर आप एक और चीज भी देखें कि इस्लाम किस तरह फैला था, जो बाउंड्रीज, बेसिकली इट्स आवर ट्रेड एथिक्स दैट प्रमोट अस. हाँ, लोग उससे बहुत इंस्पायर होते थे. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो तिजारत का, ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बिल्कुल बिल्कुल. इट्स क्योंकि कल्चर्स को आपस में मिलाने में सबसे बड़ा हाथ तिजारत का होता है. वी नीड वन प्लेटफॉर्म अपार्ट फ्रॉम ऑल द एथिसिनिटीज. जबान सब खैर है, सबकी डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है. तो एक प्लेटफॉर्म है जिसपे जाके हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, एंड दैट्स ट्रेड. वेरी ट्रू. बिकॉज मोटिवेशन भी है ना कि पैसा मिलेगा, काम आएगा, यू नो, एंड दे विल बी प्रॉस्परस. वेरी ट्रू. सो दिस इज व्हाट यू आर प्रमोटिंग. फिर उस हिसाब से तो आपका काबुल में भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. बिल्कुल, काबुल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्कुल है. और यू विल बी सरप्राइज टू नो द पर्सन हु इज हेडिंग काबुल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज ऑल्सो हेडिंग द कमिटी ऑन पीस एंड ट्रेड थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड. अरे यार, दिस प्रोग्राम इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, इजंट इट शहजाद? आई एम श्योर ऑल आवर लिसनर्स वुड बी रियली वेरी हैप्पी टू हैव ऑल दिस इन्फॉर्मेशन कि इवेंचुअली देर आयत दुरुस्त आयत कोई ना कोई है इस मुल्क में जो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर रहा है और इसको आगे बढ़ा रहा है. अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है और इसका जो मैग्नीट्यूड है और इससे जो ट्रेड के अंदर हम लोगों को हेल्प आउट होगा, जितना हम लोग अपने आप को एक्सपैंड कर सकेंगे, हमारे नेबरिंग कंट्रीज के अंदर हम लोग किस तरह स्टैंड आउट करेंगे, जरा ये भी बताइए. सलमान, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अगर आप, मैं छोटी सी एग्जांपल्स आपको बताऊं, यूएई के अंदर दे हैव गॉट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ईच एंड एवरी ऑफ द सिटीज. ठीक है. देयर इज अ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन दुबई, इन अजमान, इन अबू धाबी, इन उम क्वेन, इन फुजैरा, राइट. इंडिया हैज गॉट समवेयर अराउंड 7 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स. चाइना हैज मोर देन 8 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स. सबसे बड़ा इशू ये है कि यू नीड एन इंटरनेशनल बॉडी जो कि आपके सारे ट्रेड को, आपके लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे. वेरी ट्रू. लेट्स सपोज आप टेक्सटाइल के अंदर हैं, यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट्स अब्रॉड, वी हैव गॉट वन विंडो. आप आके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से कांटेक्ट करें, वो आपकी क्यूरीज, आपके प्रोडक्ट्स अपने ऑनलाइन कैटलॉग्स के अंदर रख देंगे. वी गेट हंड्रेड्स ऑफ क्यूरीज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. दे वांट टू सेल अस सम प्रोडक्ट. बेसिकली आप यहाँ पर आज देखेंगे कि मेजॉरिटी जो है वो यूजुअली एक्सपोर्ट के लिए काम कर रही होती हैं. वी विल बी डूइंग ऑन बोथ एस्पेक्ट्स, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स बोथ. So this is going to be one platform where you think you would be able to communicate with the world through trade and, you know, convince them of our talents and, you know, grasp a lot of foreign direct investment and, you know, tremendous impact. Well, girls and guys, amazing project going on in Pakistan. World Trade Center Islamabad के बारे में शायद इतनी मालूमात हमें पहले नहीं थी. इसी वजह से हमने ये खसूसी प्रोग्राम शुरू किया है ताकि अपने लोगों को हम बता सकें, आगाह कर सकें तिजारत के उन मौकों पे जो वो हासिल कर सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद में. वेल, राइट नाउ आई एम गोइंग टू गो हिट अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग शहजाद, एंड वंस वी गेट बैक थोड़ी गपशप लगाएंगे, उस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे. राइट, देयर यू गो. ऑलराइट गर्ल्स एंड गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी आर बैक इन द प्रोग्राम एक मरतबा फिर, और हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद फ्रॉम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद. फ्रॉम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद के बारे में बात कर रहे हैं और मैं आपका होस्ट अहमद सलमान अनीस. बस जी, गुफ्तगू जारी और सारी है. दिस इज लाइक अमेजिंग प्रोजेक्ट दैट वी आर डूइंग ओवर हियर इन पाकिस्तान. अब हमारे पास मैसेजेस भी काफी हद तक रिसीव हो रहे हैं, लेकिन वक्त इतना कम है हमारे पास प्रोग्राम में कि हम शायद उनको इंक्लूड ना कर सके. लेकिन नाम बताता चलता हूँ, हमारे पास सुंबल का मैसेज है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, इस किस्म की तिजारती प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए. बहुत शुक्रिया आपका. उसके बाद हमारे पास आरिफ का मैसेज है, वो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम कर
رہے ہیں, اور ہمیں اتنا پاکستان کے بارے میں پہلے معلوم نہیں تھا. پاکستان کا تو خیر ہم دعویٰ نہیں کرتے, پاکستان میں تو بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں, ہم تو صرف پاکستان کے ایک اور منفرد پروجیکٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کو سامنے لے کے آئے ہیں, جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے. 100 کے ایسے پروجیکٹ کے بارے میں آپ لسنرز کو بتائیں. اچھا شہزاد, جو الغریر گیگا ہے اور جو آپ کا گروپ ہے, اس کے حوالے سے تو ہم اگلے پروگرام کے اندر بات کریں گے. آخر میں مجھے یہ بتائیے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ایسوسی ایشن کے جو ہیڈ ہیں یا جو پریزیڈنٹ ہیں یا جو ان کی اپر مینجمنٹ ہے, اس کے کیا تاثرات ہیں آپ کے اس پروجیکٹ کے بارے میں؟ سلمان, جو پریزیڈنٹ ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر ایسوسی ایشن نیو یارک کے, ان کا میسج ہمیں ایک ریسیو ہوا تھا کہ میں اپنے لسنرز کو وہ میسج سناؤں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اسلام آباد کے بارے میں. غائب فضولی کہتے ہیں کہ اٹ از اے میٹر آف گریٹ پلیزر فار می ایز پریزیڈنٹ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ایسوسی ایشن اینڈ آلسو فار ورلڈ ٹریڈ سینٹر ایسوسی ایشن ٹو لرن دیٹ کنسٹرکشن آن ورلڈ ٹریڈ سینٹر اسلام آباد از پروگریسنگ ویل اینڈ اٹ ول سون اپیئر ایز اے نیو اسٹار آن دا میپ آف ورلڈ ٹریڈ سینٹر ایسوسیشن as a fully functional World Trade Center. I would like to congratulate Al Ghurair Giga Pakistan Private Limited, the licensee of World Trade Center at Islamabad, to undertake such a gigantic project in Pakistan and making all-out efforts to complete it and make it operational within the stipulated period of time. As one of over 300 members of WTCA in around 100 countries of the world, with 750,000 international trade companies as their affiliates, I am confident that World Trade Center Islamabad will prove itself as an icon of Pakistan and shall definitely be instrumental in boosting Pakistan's international trade, foreign direct investment, tourism, local trade, commerce and industry, and generate immense economic activity in Pakistan. As one of over 300 members of WTCA in around 100 countries of the world with 750 international trade companies as their affiliates, I am confident that World Trade Center Islamabad will prove itself as an icon of Pakistan and shall definitely be instrumental in boosting Pakistan's international trade, foreign direct investment, tourism, local trade, commerce and industry, and generate immense economic activity in Pakistan on perpetual basis through its services to the business community. I pray for complete success of this endeavor of the management of Al Ghurair Giga Pakistan Private Limited and assure my fullest possible support and guidance for World Trade Center Islamabad. Shahzad, it is a very interesting and very motivating message جو آپ کے پریزیڈنٹ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ایسوسی غائب فضولی نے دیا ہے. آلرائٹ شہزاد, ایک ہمارے سے بڑا اچھا مزے کا سوال پوچھا ہے اور بہت اچھا ہے کہ بالکل آخر میں انہوں نے پوچھا ہے, یہ ہم آخر میں ان کا میسج انکلوڈ کریں. ہمارے پاس شاہد کا میسج آیا ہے راول پنڈی سے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو انٹروڈیوس کون کر رہا ہے پاکستان میں؟ یہ سلمان, یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اسلام آباد کو جو گروپ لے کے آیا ہے, we need a complete program to define these people. Basically this is a project of Al Ghurair Giga Pakistan Private Limited. اور جو Al Ghurair Giga, True. Is it one company or is it two companies? Basically it is a joint venture of two companies. The Giga Group, they have got the roots in Pakistan, and Al Ghurair Group, it is purely an Arab group جو کہ مڈل ایسٹ کے اندر وہ ہے. اس کے اوپر میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر کمپلیٹ ڈیٹیلز کی دوں گا کہ کیا ہے, کس طرح اور بھی ہمارے جو پروجیکٹس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو لسنرز, آپ کے جو بھی سوالات ہیں, جو بھی چیزیں آپ پوچھنا چاہتے ہیں, کہیں تک جائیے گا. ہر پیر کی شام 7:30 سے 8 بجے تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تاکہ ہم آپ کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر اسلام آباد کے بارے میں بتا سکیں. اور یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے, اس وجہ سے ہم نے بہت سارے پروگرامز آپ کو ان کے لیے ڈیزائن کیے ہیں. ہر پروگرام میں ہم آپ کو ایک نئی مختلف چیز بتائیں گے. شہزاد, آپ ہمیں بتائیں گے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ٹریڈ پہ کیا امپیکٹ ہے, پھر کلچرل سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ ہے. نیکسٹ پروگرامس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی اور کیا کیا سروسز ہیں, ہم کیا کیا سروسز پرووائڈ کریں گے آپ کو. انشاءاللہ ایک پورا پروگرام کریں گے ٹریڈ کارڈ کے اوپر. تو یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ تقریباً 2008 کے اندر صرف ایک پورشن کے اوپر, ایک فیسلٹی کے اوپر تقریباً $10 بلین کی ٹریڈ ہوئی ہے. 10 بلین, یا ٹرو, صرف ٹریڈ کارڈ پہ $10 بلین کی ٹریڈ ہوئی ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کو کس طرح سے ڈیٹیل میں جائیں گے, کس طرح سے ریسپیکٹ ٹو ورلڈ ٹریڈ سینٹر اسلام آباد. اور لسنر, جیسے جیسے آپ ہمارے پروگرام سنیں گے, آپ کو یہ تمام تفصیلات سے آگاہ بھی کیا جائے گا اور آپ ہمارے سے مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ اس پروگرام کو نہیں سن رہے یا آپ کو اور مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ ویب سائٹ جو ہے www.wtcisp.com اور FM 100 کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی ان کا بینر لگا ہوا ہے, تو یو کین آلسو گیٹ اے لنک فرام دیر آلسو.